Okay, Diwakar, I think the part one was very good and we discussed and learned a lot of things. So, as this is the second part, so I'd like you to continue the things that we dropped in the first part. In the last, I think this was about the Bihar job opportunity, startup, things like that. So, आप इसको अभी बिहार में जो चीजें चल रही है, सो अभी क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बिहार में काफी लिमिटेड है and you are one of Mm-hmm. those people who are on the path to create some job opportunities for the people who can work from anywhere in India. So, what could be the strategies like how we can create more job opportunities and what initiatives our Bihar government should take on this? How do you see this? So, first of all, first of all, for creating this kind of opportunity, it's all about the mindset, sir. First of all, in Bihar, most of the people, I will say 80%, 70 to 80% of the people thinks that only jobs that exist, high quality jobs that exist is the government job. Either it is from railway department, either from army, or either from many other places. So we need to make them feel understood that yeah, this job is good. And even my family member, either my father or my every person in my family are coming from a service background and they are coming from a government background. Yeah, Mm-hmm. I'm the only first person in my family who take a different path. And yes, when you take a different path, a lot of people will see ki what you are doing. Nobody will respect you and other things. Because as a society in Bihar, this is not appreciated. There is also a reason of that. It's not like that people, since when somebody is saying private job, what is the meaning of private job in India? Private job, either they will do work on a very small shop like a clothes shop or some other shops, and hardly they pay 10,000 rupees, 8,000 rupees, 9,000 rupees a month, or max to max 15,000 rupees a month in smaller cities like Kathiawar or Motihari or some other places. So, because since Bihar is a very deprived state in terms of high quality jobs, high quality, what is the meaning of high quality jobs? High quality jobs like blue collar, IT jobs, research jobs, marketing jobs. So these are the highest consulting jobs. These are the high quality jobs which is lacking in the Bihar's ecosystem since Bihar does not have a infrastructure ready for that before. Now things are progressing and it will certainly takes time. First of all, we have to start from appreciating who's taking certain risk. In my network, because I see a lot of people who is trying to take a risk, and Bihar state government has also initiated a one grant of 10 lakh rupees as a funding, and it's kind of a soft loan, but it will be taken as a funding route mechanism. So Okay. what I understood is that this is a good step, but more than that, we need to change the perception. We need to make it more cool. We need to make it more viable. Let's say if somebody is taking a risk, we have to appreciate them. We have to make them feel comfortable in the society. And so they are a part of the society. Even though I'm doing my work, I'm running a good company, a lot of people don't know what this guy is doing. क्या ही कर रहा है. So this happens because this since this kind of ecosystem has not exist in the Bihar. So yeah, this is the problem that happens. And for addressing that, we need to start from the grassroots level. First of all, we need to inform that hey, this opportunity exists. We need to teach them how to be fluent in English. English is not just a language; it's opened a lot of doors for you, a lot of opportunities for you. Because since I know English, I'm able to communicate with a client from either from US, UK, Dubai, Singapore, a lot of places. It's open almost, I will say, English language opens me around 60 to 70% of the world market, and which is enough. Australia. So even in India, if you want to work with the top 1% of the people, you must be confluent or influenced in English. So that is a very important part. Teach them that hey, this kind of job also exists, and show them a good case study that hey, this person, let's say Ram has done XYZ, have generated let's say 10 lakh rupees from the remote job culture, or one I will tell you one of my studies of my brother, who is coming from a very village background, and what he's done, he at the time he does 12th, okay,
He, due to his certain friend influence, he know about one NGO kind of initiative, Gurukul kind of initiative, where they just teach them, they just keep him for 2 years, and in 2 years they teach them the personality development, how to learn coding, how to build application, how to build websites, how to do the things. And after 2 years, he's so confident. Now he's working as a he's working remotely for a US based company, sitting in remote village in Bihar and earning around 30, 40, 50,000 rupees a month. Oh, wow, Now it's great, just a one testament. great, great. It's just a one testament, and this student or this my brother is coming from a Bihar board background. He's not coming from a CBSE background, even though he's able to do that because he got this kind of opportunity, and we are able to create certain kind of opportunity for them. So we need to make an ecosystem on that. We need to make small groups. That hey, this is the group. And one thing I will also tell you, in Bihar, there's a one culture that is lacking, supporting each other. Because Yes, I if agree. somebody is growing, the other person try to pull their legs. That's not how we will grow. Yes, yes, So, it happens, and this is the story of every village in Bihar. I agree. so we need to support them. Why do you think that Gujarat, Maharashtra is able to grow? Because I got a chance December. I visited Mumbai and I just see the magic of Mumbai. To be honest, the Hmm. people, the kind of nature, the kind of culture there is very amazing. Hmm. It is very fabulous. It is definitely said it's a Maya ki Nagari. The reason Hmm. is very simple because when you go there, you will see a lot of all the people are supporting each other. I'm not saying 100%, but even a small vendor. So Hmm. different places, you will see different logic, different perspective, different thought process. When I go to places like Bangalore, Mumbai, a lot of people think how I can go foreign and earn USD. But definitely for a physical job. But for a remote job like us, sitting here and earning in USD and spending in rupees, that is the best flex that we can do. And not only do it, we also able to create a lot of job opportunities. We'll able to do the export. We'll able to strengthen the economy of India, and as a whole, as a nation, we will grow together. So we need at least 4 to 5 thousand entrepreneurs through the micro entrepreneurs. I'm just who is micro. What is the meaning of micro entrepreneur? The entrepreneur who is earning 1 crore, 2 crore a year. That is enough, yeah. Matlab, if you are able, and it's a Yes, wealth good. distribution, Yes, creation of jobs, creation of more category leaders, and it will only happen if we support each other. And if we tell them that hey, this thing is possible, we need to make them believe that yes, this thing is possible. Make our ecosystem right, make our culture right. Definitely, it will take time. It's not like it's an easy process. It's a shift in the pyramid, and we need to make them sure that hey, the selection ratio in any government job is less than 1%, 0.5%, 0.6%. What yes, I agree. 99.5% people do. So they will have to understand that only government job is not the one option that is available. In private jobs as well, you have opportunity to work remote, to work with global companies, work as a global environment. But for that to happen, you need to change your attitude. You need to change your perspective. You need to change your personality. First of all, you need to change your whole skill as a whole. Until your skill is not built, you will not able to grow. Very simple. Good, So good, good. skill-based Perfect. information, skill-based education, skill-based training is the key. Mhm. Yes, Because yes. nowadays Good. AI take place a lot of role, and it will definitely take away a lot of jobs, and as well as it will also create a lot of jobs. So we need to be very clear, very concise, and we need to be upfront about that and help each other and grow together. That is our whole perspective on that. Good, good, good. Okay, great, Diwakar. You delivered something good. So in Bihar, Diwakar, like like बिहार जो है दिवाकर, बिहार में चीजें जो है लाइक यस, अगर ये बात की जाए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बिहार अपना जो है वन ऑफ द टॉप स्टेट्स है गवर्नमेंट ऑफिसर्स देने में, लाइक आईएएस That is good. आईपीएस। ये हाँ, ये तो है कि बिहार में अपना हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हर एक स्टेट में मिलेंगे बिहार से। लेकिन बिहार, Yeah, अपने even my बिहार में family जो member यूथ है, हाँ यूथ है, और जो लोग हैं, इनका जो माइंड सेट है, वो गवर्नमेंट जॉब से इतना स्टिक है, इससे ऊपर उठना नहीं चाहते हैं।
एग्री करते हैं आप इससे? मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ नबीश जी। और मैं इससे इतनी सहमत करता हूँ क्योंकि देखिए इसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवरीबडी वांट टू डू दैट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी, तो मैं सही बोलूँ, कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और आप जिस चीज के लिए अस्पायर करेंगे आप वो बनेंगे। मेरा सीधा सा लॉजिक है, द थिंग्स दैट यू अस्पायर फॉर यू बिकम दैट। If you aspire to become a scientist, you will become a scientist. Whatever you think, if you aspire to become a businessman, you will become a businessman. It's all about the thinking. Let's say you want to go from your city to Patna or Delhi. You have a thinking, मेरे को पटना जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, तो you will go there because you have aspiration. You think about it. Before happening anything, you have to think in your mind to believe in that. So ये वाला चीज है. And why people are very, first of all, in government job, they feel 100% secure. They feel comfortable. And there's a one mindset in Bihar that is ruining the Bihar ecosystem कि यार मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को फ्री में पैसा. यस, हाँ, Very कुछ है, simple हाँ। thing that अ, I ऐसी understood. चीजें चल रही है। There are certain डेफिनेटली। personalities of the people. I That's my personal objective. I might be wrong, but that I see a lot of people. If I get a government jobs, I don't have to do any work and do all sort of things. So yeah, and the another region, because it's add in their social profile. If you have a government job, even as a peon, it add a different profile. But if you're earning 1 CR in a Google package, it doesn't matter to the other party. The person who is a peon is more respectable in Bihar in comparison to the person who is having a 1 crore package in Google, because at the end of that they don't know the value of it. And when you ask any person from any village or any when good affluent people in Bihar, they will say government job has security, private job don't have a security, startup don't have business, don't have a security. And you will also observe one thing in Bihar, whoever is running a small business like clothes shop, mithai shop, or whatever it is, you will observe that 50 to 60% of the people are from outside Bihar. Either they are from Rajasthan, they are from Marwadi community, they are from Jain community, they are from this kind of community who is sitting in Bihar and they are monopolizing the ecosystem of Bihar. And it is a good thing as well as bad thing as well. So again, how you are taking it, because most of the Bihari Indian people always thinking for government jobs, and they're aspiring for that. And it is bounded, even to be honest, from my family itself, even though I'm doing a good and I'm creating employment to the other people, even my family says, why not you take a government job? So that also happens to me, and people ask me. So यस, that's यस, how it यस, is. But you need to accept. यस, यस। एंड दिवाकर, एक चीज भी मैंने नोटिस करी है, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस, दैट इन बिहार एजुकेशन बोर्ड इंग्लिश इज नॉट कंपल्सरी। Mhm. Do you know? I hope you know. Yes, I also. English Yeah. subject is not compulsory till 10th of the exam। 10th के एग्जाम तक जो होता है इंग्लिश हमारे यहाँ कंपल्सरी नहीं है। आई थिंक जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, दैट वाई द यूथ इज नॉट कमिंग अप टू अ पॉइंट। इंग्लिश जो है कंपल्सरी नहीं है, जो कि Mhm. आज के टाइम में दिस हैज बिकम अ ग्लोबल थिंग। and if you just know English, a basic English conversation, a basic English communication can help you earn 20 to 25,000 in top cities, just because of English। but True. just because of English, बिहार के जो यूथ है वो आगे नहीं जा पा रहे। और ये चीज मैंने नोटिस करी है I आज। totally. मैं 2-3 साल से अपने गांव में हूँ, ठीक है। सो जो यहाँ पे आसपास का जो माहौल है, जो कि आपने कहा, एक चीज Hmm. कहा कि लोग जो जहाँ एस्पायर करेंगे जाने को वहां जाएंगे, लेकिन एक चीज इसके अलावा एक चीज और है, उनको आगे Hmm. गाइडेंस जो है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इवन मैं आपको एक केस बताऊं Hmm. अपने रिसेंट, अपने यहाँ की जो कोचिंग सेंटर्स है, they are not Hmm. like guiding the students, yeah, motivating the students to learn English। This is the biggest bad thing that is happening in Bihar. As if there is a math and science teacher, so they just want to a student to only learn math and science, and they are clearly asking the students कि there is no need to learn English, you can just pass the 10th exam without English। yes, this is okay, this is right। and student जो है वो
इसके बिना तो टेंथ पास कर जाते हैं, लेकिन जैसे टेंथ पास करते हैं ट्वेल्थ में जाके तो फंस जाते हैं। और ये चीज मेरे को जब मेरे को पता चला, क्योंकि इन माई जो मेरे घर में कुछ बच्चे हैं वो भी जाते हैं पढ़ने, तो मेरे को उनसे सुनने को मिला। तो मेरे को ये चीजें काफी हम्म, खराब लगी, क्योंकि जो वैसे बच्चे गांव में हैं, मैं समझिए दिवाकर में फुल्ली विलेज, जैसे मेरे यहाँ से जो मोतिहारी है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर आ गए, तो मैं एक पूरा विलेज सेटअप है। तो यहाँ से मैं ओके। चीजें जो चीजें आपने बताई, तो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे रूट्स में प्रॉब्लम है, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक तो पहली चीज वो तो मतलब थियोरेटिकल नॉलेज दे ही रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं हो रहा है, कोई स्किल बेस्ड चीजें नहीं चल रही है। लेकिन दूसरी चीज तो सबसे बड़ी हम्म, प्रॉब्लम है और इंग्लिश। लोग इंग्लिश को जस्ट ट्वेल्थ में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जस्ट मार्क्स गेन करना है पढ़ने के लिए, लेकिन इंग्लिश को कोई भी एज कम्युनिकेशन एज अ स्किल लेके कोई नहीं चल रहा है अपने, जो कि आई थिंक एक सबसे बड़ा थिंक है। और मैं बताऊं दिवाकर, तो 3-4 साल पहले आई थिंक 2019 से पहले मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब का ही पार्ट था। आई थिंक बिहार से मोस्टली लोग जो हैं वहीं से निकल के आए हैं। तो वन थिंग जो मैंने हम्म, एनालाइज किया कि मेरे को थोड़ी इंग्लिश आती थी, आई वॉज अ लिटिल बिट गुड एट हम्म, इंग्लिश, and just because that I started learning writing, blogging, website building, and just because I'm here, I'm talking to you. And if I ओके। am also I just continued the race of government job, then I wouldn't be never. सो आपके यहाँ मैं दिवाकर, आपसे हंड्रेड। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कैसी है इंग्लिश को लेके? बच्चों में आप जैसे बच्चों से मिलते होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, आस पास होंगे, आप गांव में जाते होंगे, तो वहाँ पे क्या माहौल है इंग्लिश का? सेम मेरे जैसा वहाँ पे क्या है? नहीं, आप ही के जैसा पूरा माहौल है सर। जी। क्योंकि मैं कटिहार से बिलोंग करता हूँ। कटिहार में भी कहीं ना कहीं सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है। हमें ना ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। और यस यस, ये चीजें डेफिनेटली। जब तक हम लोग ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे नहीं। मेरा सिंपल सा विजन है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत ही अच्छी कंपनी से, रिनाउंड कंपनी से अच्छा पैकेज मिला है। मैं उस पर अपना लाइफ सेट कर सकता हूँ, बट द रीजन कि मैं अपना ये छोटी सी करियर चला रहा हूँ, छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ। आई नो कि वन डे इट विल ग्रो बिग। इट्स जस्ट द स्टार्ट। मैंने कहीं पे भी जॉब नहीं किया है, मैंने कहीं पे भी कुछ नहीं किया है, बस छोटे मोटे इंटर्नशिप वगैरह किए हैं, बट वो एक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। मैं इसलिए ग्रो कर पाया क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से 10th तक पढ़ा था, और 11th 12th मैंने बिहार बोर्ड से पढ़ा। तो जब मैं 10th तक पढ़ा था तो मेरा एक बेस स्ट्रांग था, कहीं ना कहीं मैं इसलिए फ्लुएंट बोल पाता हूँ, फ्लुएंट लिख पाता हूँ, फ्लुएंट सोच पाता हूँ, फ्लुएंट थॉट प्रोसेस कर पाता हूँ। तो यस, इंग्लिश प्लेज अ ग्रेट रोल। एंड मैं एक चीज देखूं, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं या जो आईसीएसई बोर्ड से पढ़ते हैं, तो उनका कुछ हद तक इंग्लिश ठीक रहता है। बट जो कम्प्लीटली बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उनका ना कम्प्लीटली यही सिस्टम है कि वो पढ़ते नहीं है, इंग्लिश उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। मैं ये नहीं, देखिए इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज है, लेट्स से मेरा अंगिका भाषा है, मैं अंगिका भाषा बोलता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मैं हिंदी भी बोलता हूँ, मेरे को थोड़ा बंगला भी आता है क्योंकि मैं 4 साल कलकत्ता में रहा हूँ, और मेरे को इंग्लिश भी आता है। मेरे को 3-4 लैंग्वेज आते हैं। इससे मेरे लिए सबसे बड़ा चीज क्या है, अंगिका भाषा मैं अपने घर में बोलता हूँ। चलिए, वो घर की चीज है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत ही प्राउड के साथ बोलता हूँ। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, बहुत ही इसको मैं बोलता हूँ। बट इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो आपके लिए पूरी दुनिया खोल देता है। अदरवाइज मैं यदि इंग्लिश नहीं जानता, एब्सोल्युटली। तो मैं बच्चों को ये इंस्पायर करना चाहता हूँ कि भाई इंग्लिश इसलिए ना सीखो कि इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। इंग्लिश इसलिए सीखो क्योंकि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। एंड आपको यदि टॉप मेरे को तो ये चीज दुख होता है कि जो लोग सिर्फ 30,000 रुपीज या अराउंड 40,000 रुपीज अ मंथ कमाते हैं, वो टॉप 10% ऑफ इंडिया के अर्निंग पॉपुलेशन में आ जाते हैं। तो मतलब हमारी 90% आबादी 30,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पाती। नहीं, बिल्कुल मेरा सही है। कहने का तो यही मतलब। हम्म। सही है, सही है, सही बोल हम लोगों को यदि आपको इवन, चलिए मैं टॉप 1%, तो चलिए थोड़ी दूर की बात हो जाती है, टॉप 1% में आपको 4 लाख रुपए मंथली कमाना पड़ता है। तो बट इवन टॉप 10% में आने के लिए आप इंग्लिश सीख लेना, आपके लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, यदि आपको गवर्नमेंट जाना है, बट वहां पे आप भी जानते हैं सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 0.5% मैक्स टू मैक्स होगा, चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी हो 0.001%, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। बट 99.95% पीपल का क्या, तो उनको तो कहीं करना पड़ेगा ना।
सो यू आर, हम लोगों को थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोगों को उनको सिखाना पड़ेगा, इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और देखा हूँ, जैसे मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था, फ्लाइट से आया था बागडोगरा से, और हम्म। मैं आ रहा था, एक बंदा था, उसको इंग्लिश भी आता था, इंग्लिश के साथ साथ उसको उर्दू एंड फारसी वगैरह भी आता था। ठीक है। तो उस उनका क्या जॉब था, ही इज वर्किंग इन गूगल। और गूगल पे वो क्या करता है कि वो चीजों को ना देखता है कि गूगल में जो यूट्यूब पे कंटेंट डाला जाता है वो सही तरीके का कंटेंट है या नहीं, कहीं ना कहीं उसमें लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसको हेल्प किया है। और वो कटिहार के ही जगह से बिलोंग करता है। और वो अभी हैदराबाद में काम कर रहा था, कहीं ना कहीं वो, उसको इंग्लिश आता था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंग्लिश की समझ थी, तभी वो अभी गूगल पे काम कर पा रहा है एज ए कंटेंट जो देख पाता है, अरबी, अराबिक एंड बाकी के जो कन्वर्जन होते हैं, तो वो उसमें कहीं यस ना कहीं मदद कर यस पाता यस। है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि लैंग्वेज जितना आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना इजीली क्लियरली थॉट कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं। यदि हम लोग के डिस्कशन पे देखेंगे, जो भी हमारे हमें देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इसलिए क्लियरली बोल पा रहे हैं, क्लियरली सोच पा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, क्योंकि हम लोग सोच क्लियरली पा रहे हैं। तो कैसे सोचा जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे बातों को प्रेजेंट किया जाए, कैसे दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए। और मैं एक बुक हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि जिनको भी इंग्लिश सीखना है, जिनको भी अपने लाइफ में ग्रो करना है, उनके लिए सबसे पहला चीज बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक्स मतलब होता है, बुक्स मतलब वो किताब 11 12 का नहीं, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए, हाउ टू, मेरा सबसे बेस्ट बुक मैं बोलूंगा जिसने मेरी लाइफ को पूरा चेंज किया, हाउ टू विन फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक मैं हर आदमी को यस रिकमेंड करता हूँ। दूसरा बुक रिकमेंड करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि ये तो बुक ना आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा। एंड जब आप ये पढ़ेंगे, दिस बुक टोटली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। और मैं इस बुक को जितना क्रेडिट दूं उतना कम है, क्योंकि वो जब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है तब आपका काम करने का तरीका चेंज होता है। और जब आपका काम करने का तरीका चेंज होगा, यदि आपको 1 करोड़ कमाना है तो उसका एक अलग पाथवे होता है, यदि आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो उसका एक गलत पाथवे होता है, यदि आपको 1,000 रुपए कमाना है उसका एक गलत पाथवे होता है, यदि आपको पहला 100 रुपए भी कमाना है। आपके लिए कोई भी काम, कोई भी, हमें जो यंग प्रोफेशनल हमें देख रहे हैं, चाहे वो रिमोट वर्क के कारण देख रहे हो, चाहे वो कुछ बिहार के इकोसिस्टम के कारण देख रहे हो, तो हमारा एक ही चीज फंडामेंटल है कि आप सीखने पे फोकस कीजिए। चाहे आप इंग्लिश सीखें, आप कोडिंग सीखें, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ना बहुत ही बड़ा इकोनॉमी है। और ये रहेगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तो रहेगा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। और ये हमेशा रहेगा, भलो थोड़ा इफेक्ट एआई का आ जाए या कोई और आ जाए, बट हमें रिस्क लेना है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है नॉलेज बेस्ड वर्क का, कि आपको इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, और यू आर सॉर्टेड। और बैंक अकाउंट तो लगभग हर लोगों के पास रहता ही है, उससे बहुत, ये यस, तीन डन चीज डन, आप इट्स कहीं पे एनफ, भी। इट्स एनफ। सो दिवाकर, एक तो चीज और, आप जो एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, जो टीचर्स हैं हमारे बिहार के, स्पेशली जो बच्चों को हम्म, 10th तक पढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? क्योंकि वही जो है बच्चों का फाउंडेशन बना रहे हैं, और वहीं अगर बोले कि आप इंग्लिश न पढ़ना ना पढ़ो, क्योंकि 10th तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। सो यू कैन पास क्लियर द 10th एग्जाम विदाउट इंग्लिश. So I think our हम्म, teachers of Bihar must be aware the importance of English, as this directly opens the world to the youth of Bihar. So if you can एब्सोल्युटली। say something to the teachers, then it will be helpful. So please. तो देखिए, मैं बचपन से टीचर ही बनना चाहता था। और मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आया क्योंकि मैं इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट करता हूँ। और कहीं ना कहीं टीचर मैं इसलिए बनना चाहता था क्योंकि टीचर एक देश का भविष्य बनाते हैं, एक राज्य का भविष्य बनाते हैं। तो मैं टीचर के लिए एक ही मैसेज है सर, कि आप लोगों, आप जो भी आता है सर, आप दिल से पढ़ाइए। ठीक है। और उनको बताइए कि इंग्लिश आप इसलिए नहीं सीखिए कि ये एक लैंग्वेज है, आपके लिए एक दूसरा लैंग्वेज है, नहीं। आप इसलिए सीखिए क्योंकि आपका इससे सीखने से आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगे। तो बस ये पर्सपेक्टिव यदि चेंज कर दिया जाए ना, ज्यादा पैसा कमा पाएगा। देखिए, पैसा सबको समझ में आता है, चाहे कोई 10,000 कमा रहा है वो चाहता है कि मैं 15,000 कमाऊँ, जो कोई 15,000 कमा रहा है चाह रहा है 30,000 कमाऊँ। तो ये जो ट्रांजिशनल शिफ्ट है ना कहीं इंग्लिश एक अच्छा लीवर ऑफ ग्रोथ बनेगा। मेरे को ये जब खुशी होता है कि जब मैं यूएस डॉलर्स में कमाता हूँ और जब इंडिया लाता हूँ, तो अपने अंदर एक खुशी होती है कि यार चलो मेरे तरीके से, चलो छोटा सी हो, चाहे $100 का हो, चाहे $1,000 का हो, चाहे $10,000 का हो,
छोटा सा भी यदि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो इकोनॉमी यूएस में था, यूके में था, ऑस्ट्रेलिया में था, वो पैसा भारत में ला के मैं इसलिए ला पा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को इंग्लिश आता है। एंड यस, यस, English is that language which is accepted by 60 to 70% of world population. मैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन का बात बोल रहा हूँ। 60 to 70% आपके लिए दुनिया खुल जाती है। और नॉलेज डेफिनेटली, बेस्ड वर्कर के डेफिनेटली। लिए तो इंग्लिश। यस, यस, रियली, रियली। अनदर तो थिंग, आप उस दिवाकर, यस, पर्सपेक्टिव से देखिए। यस, another thing, Diwakar, we should talk about AI. AI, क्योंकि अभी AI जो है, हम्म लाइक आफ्टर चैट जीपीटी केम इन 2022, like everything, हम्म whatever things, when we go online, we just get an AI. AI चारों ओर है, और जस्ट जब भी हम कुछ भी हम्म चेक कर रहे हैं, कुछ भी कहीं देख रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि एक और AI टूल आ गया, एक चाइना ने लॉन्च कर दिया, एक ये आ गया, एक हम्म वो आ गया। सो एआई जो आया है, आई थिंक जब से एआई आया है, तब से हर एक जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, जो कॉरपोरेट आईटी सेक्टर्स की जॉब है, कुछ चीजें चेंज होनी शुरू हो गई है। ले ऑफ्स भी होने लगे हैं। ले ऑफ्स के साथ साथ, हाँ, ले ऑफ्स के साथ साथ कुछ चीजों में एआई जो है आज के टाइम में काफी लाइक ग्रो हो गया है। जैसे रिसर्च, रिसर्च में आपको आई थिंक पता होगा, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी जो कि आई थिंक आप बोल सकते हैं दूसरा गूगल, क्योंकि ये पूरा रिसर्च ड्रिवन टूल है, हम्म जो कि लाइव रिसर्च करता है जाके गूगल पे। और अनदर, सो इस तरह की चीजें हो रही हैं, हम्म नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जॉब्स जो हैं, जॉब पे इम्पैक्ट हो रहा है। So, आप how do you see this? Like, how where the future is going? What will be with the jobs, and how youth needs to prepare themselves to deal with AI and create land job? तो वो एआई ये एक सकते हैं और ये रहेगा, ठीक है। आपको देखिए, एआई बहुत ही जल्द बहुत सारे इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर देगा। बहुत सारी इंडस्ट्री जो आज है वो कल नहीं रहेगी। एंड इट इज अ हार्श रियलिटी। यदि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी करता हूँ, 5 साल के बाद इसका पूरा धरातल चेंज हो जाएगा। जो मैं अभी कर रहा हूँ वो 5 साल बाद मैं नहीं करूंगा, या नेक्स्ट Yes, अगले because साल ही 2025 में जो कर रहा हूँ। Diwakar, I have noticed that many tools like recently जो चाइना ने लॉन्च किया, क्या नाम था उसका, डीप सी चाइना, यस, डीप सी। सो सीधा डीप सी प्रॉम्प्ट दीजिए, जो भी जैसा वेबसाइट बनाना है, वो आपको पूरा कोड कोड लिख के दे रहा है। आप किसी टूल में डालो डालो तो उसका वेबसाइट तो बन जा रहा है, टूल वेबसाइट लोग बना रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं, हो बहुत रही सारे हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें है, नो कोड ऐप डेवलपमेंट भी है। बट देखिए, बहुत सारी चीज आएंगी, बहुत सारी चीज जाएंगी। कुछ हम्म। चीजें बबल भी है, बट कुछ चीजें जेन्युइन भी है, ठीक है। तो हमें ये फिल्टर आउट करने की क्या सी चीजें है, डेफिनेटली। मैं एक मेरा एक लाइन है जो मैं बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। एआई आपका जॉब नहीं खाएगा, बट जो आदमी एआई यूज करता है वो आपका जॉब खाएगा। तो there's a difference. AI will not take your job. The person who use AI will take your job, because यस, उनकी एफिशिएंसी लेवल, जो रिसर्च, जो काम मैं 1 घंटे 2 घंटे में करता था, अभी विद द हेल्प ऑफ एनी 10 मिनट में कर देता हूँ। तो मेरा तो टाइम बच गया ना। एंड फॉर अ नॉलेज बेस्ड वर्कर लाइक अस, तो इट्स अ बून। एआई इज अ बून। How you take it, AI will take a lot of jobs, AI will also create a lot of jobs. So how you are, until you're not upgrading yourself with the flow, with the changes, nothing will happen. If you don't upgrade, अपस्किल करिए, अब ग्रोथ कीजिए, टूल्स को सीखिए। फंडामेंटल हमेशा सेम रहता है, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो एआई रह रहे हैं। ऑलवेज ट्राई टू थिंक फंडामेंटल। द पर्सन हु इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई टूल रहे। जब जब इंडिया में कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोग बोले थे बहुत सारे जॉब चले जाएंगे, गए। बहुत सारे लोग जॉब चले गए, बट बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए। तो यस, एआई विल टेक अवे लॉट ऑफ जॉब्स, एंड यस वी विल प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट इट विल आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ डिफरेंट सेगमेंट। एआई के अलावा भी बहुत सारी चीज चल रही है, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डीप रिसर्च हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, सोलर हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी हो गया। बहुत सारी चीज ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड इट्स अ नेचर ऑफ द पीपल, इट्स अ नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट कि हम लोगों को
हर दिन इवॉल्व करना पड़ता है. The more we evolve, the more we grow. Simple. Yes, great, great. I agree. So, Diwakar, I think we should now wrap up the session, okay? And thank you for joining. And as we are going to wrap up, so the final thing I would want to learn from you is remote leadership. Like, if someone wants to run a remote company or a small remote agency or team, so what leadership skills they need to have? Because just managing a remote team is different compared to becoming a remote leader. So, what is your take on this? So for becoming a remote leader, you need to understand यहाँ पे expectation बहुत clear होने चाहिए. क्या required है और क्या required है नहीं. And at the end of the day, we have to be output-driven company. The person who is successful in the remote is the output-driven company, not the person who is a management-driven. So output orientation person will enhance in this leadership role, and taking the responsibility is the key here. So that is the overall crux. I will tell you that the more you grow as a leader to be successful, you have to take the responsibility, successfully execute it, and hire the right people. Hiring is the key here. Yes, 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 yes. Good. Another thing, I will just want to add some points in remote leadership. Based on my experience of past 3 years, I just say you need to be honest if you want to become a remote leader or you are already on that way. You need to be very honest yourself and with your team members. Okay, and you need to very closely understand the pain points, the struggles, the challenges of your team members because you are working remotely and you are not able to see and check on like physically your team members. So if you are not honest, if you are not true with your team members, then you are no you won't be able to manage things. You won't be able to handle things. And another thing is clear communication. So if communicating clearly with your team members, setting clear parameters, clear goals. So these are all the things that help a remote leader grow. And there are many remote team management tools, communication tools like Google Chat, Zoom meetings, Google Meet. So yes, no matter we are working on site or remote, the thing that will always matter whether how human you are with your team members. If you understand their pain points, their challenges, and provide them instant solutions, instead of judging them. So I think this would be a great approach to become a remote leader and run a remote company. So yes. So finally, we have discussed a lot of things, and thank you, Diwakar, for joining the session and sharing the most valuable, important things you have done. You have experienced in building a remote agency by sitting in a state of Bihar, in a district of Bihar, and this will always help. I think the viewers who will see this session to learn and grow. Okay, Thank you, so Nafis. Thank you, Nafis. Thank you again, Nafis, for inviting me on your show. And thank you again. And if anybody need any help, let me know. Happy to help you always. And we want to make our Bihar grow. That is my whole yes, perspective of it. yes, the final aim is to help our Bihar grow. Yes, this is the most vital line, and we all should work on this anyway. If even if you create even a single job opportunity, I think we must do it. And by doing a small things, we finally will have a big win. Okay. Okay, Diwakar, thank you. Thank And in you. future, if we have some other ideas to share, then we will definitely connect. Okay. Sure. Okay, Thank you. Diwakar, Have a thank great you. day. Have a great day.